Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we are going to continue with question number 1 of exercise 4.3. So we have already done our first part of question number 1. Exercise 4.3 is on page number 87 of our NCERT book. So we have done our first part of question number 1. So question number 1 says find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square. It means in these quadratic equations we have to find the roots by completing the square. Completing the square method we have discussed in part number 1. Now let's start with second part and again understand what is completing the square, so that now it will be more clear to you how to solve the questions of completing the square. So, second part of question number 1 is 2x square plus x 2x square plus x minus 4 equal to 0. So this is our second part. Again we have to find the roots by completing the square. अब completing the square के लिए first step is to make the coefficient of leading term 1. यहाँ पे भी coefficient of leading term 1 नहीं है, it is 2. So we have to make it 1. So basically इसमें भी हम divide करेंगे equation को by 2. Again dividing equation by 2, what we will get? 2x square upon 2 plus x upon 2 minus 4 upon 2 equal to 0. Now see, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट हो गया. So again we have x square plus x upon 2. See, this is 2 1s are 2, 2 2s are 4. So minus 2 equal to 0. Now our equation becomes x square plus x upon 2 minus 2 equal to 0. So x square का coefficient अब 1 हो गया. Our first step is complete. Now our second step is to take the constant on the right hand side. So it will be x square plus x upon 2 equal to 2, because 0 plus 2 is 2. So x square plus x upon 2 equal to 2. Now our third step is to check the coefficient of x, which is 1 upon 2. 1 upon 2 जो coefficient of x है उसका हमें करना है half. Again 1 upon 2 से multiply, so we'll get 1 upon 4. So 1 upon 4 के square को दोनों side पे हम add करेंगे. So our third step becomes adding 1 upon 4 whole square on both sides. Right? So 1 upon 4 whole square को हम both sides पे जब add करेंगे we'll get x square plus x upon 2 as it is plus 1 upon 4 whole square equal to 2 plus 1 upon 4 whole square. So now अब हम इसको solve करेंगे. See, अब LHS में हमारे पास again एक identity form हो रही है. This is a square, this is b square, this is 2ab. Right? So 2ab भी positive है. It means this will be a plus b whole square. So a is x, b is 1 upon 4 whole square. Right? A upon b whole square equal to 2 plus 1 upon 4 whole square means 1 upon 16. ये 2 upon 1 है और 2 upon 1 plus 1 upon 16. अब हमें इनको solve करना है.
So it will be x plus 1 upon 4 whole square equal to upon 16. 1 into 6, 1 16s are 16, right? And 16 twos are. So basically we have to multiply 1 into 16 and 2 into 16. 16 twos are 32 plus 1, right? 32 plus 1. So this will be x plus 1 upon 4 whole square equal to 33 upon 16. Again we have square जिसको हमें अब ट्रांसपोज करके रूट बनाना है, दैट टू प्लस माइनस रूट. सो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 33 अपॉन 16, राइट? यस. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू, अब देखो इसमें रूट्स आएंगे 2. सो 1 रूट निकालने के लिए हम यहाँ पे प्लस लेके चलेंगे और दूसरा रूट निकालने के लिए हम यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे. सो x प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33 एज इट इज रहेगा, बिकॉज 33 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता. और 16 की जगह पे हम रूट 16 की जगह पे वी कैन राइट 4. सो रूट अब ऊपर रह गया और नीचे आ गया 4. नाउ x plus 1 upon 4 equal to root 33 upon 4. This is the first root and the second root will be x plus 1 upon 4 equal to minus root 33 upon 4. This is the second root. First root के लिए हमारे पास x equal हो गया root 33 upon 4 minus 1 upon 4. ठीक है. और सेकेंड रूट के लिए x इक्वल टू माइनस रूट 33 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4. ठीक है. तो यहाँ से दिस विल बी रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4. दिस इज द फर्स्ट रूट एंड सेकेंड रूट है माइनस रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4. सो ये हो गया x इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे रूट 33 प्लस 1. This will be x equal to minus common ले लेंगे रूट 33 plus 1 upon 4. So these are the two roots of quadratic equation 2x square plus x minus 4 equal to 0. Root 33 minus 1 upon 4 minus of root 33 plus 1 upon 4 minus common, right? So I hope now completing the square method is clear. In this method, basically we have first step is to make the coefficient of x square 1, then transpose the constant term, then add. What add? Add करो दोनों साइड पे जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर. ठीक है. तो पहले तो जो कोफिशिएंट है x का उसका हाफ करेंगे. यहाँ पे 1/2 था तो 1/2 का भी हाफ करेंगे 1/4, राइट. और फिर अब 1/4 के स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करना है, राइट. उसके बाद सॉल्व करेंगे. यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाएगी, उसको नोट डाउन करेंगे, देन स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे, रूट में लिख देंगे, देन 2 वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास x की. दोज आर द रूट ऑफ the given quadratic equation. Please note down this part number 2 of question number 1 so that we can start with third part.
Okay, so now let's start with part number 3. So, part number 3 of question number 1 is 4x squared plus 4 root 3x plus 3 equal to 0. Yes, so now we have to find the roots of this quadratic equation by completing the square. First step, make the coefficient of leading term 1. यहाँ पे coefficient है leading term का 4. So divide the equation by 4. हम पूरी इक्वेशन को पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं. We'll get 4x square upon 4 plus 4 root 3x upon 4 plus 3 upon 4 equal to 0. तीनों टर्म को हमने डिवाइड कर दिया 4 से. देखो यहाँ से 4 और 4 कट, यहाँ से भी 4 और 4 कट, यहाँ पे 3 upon 4 as it is रहेगा. So now we'll get x square plus root 3x plus 3 upon 4 equal to 0. So you can see our first step is complete, जिसमें हमें coefficient of x square 1 करना था, वो हो गया. ठीक है. Now our next step is to take this coefficient to the RHS. इसको भी हम shift कर देते हैं x square plus root 3x equal to minus 3 upon 4. Okay. Now our next step is to take the coefficient of x. Coefficient of x है root 3, उसका करना है हमें half. तो ये हो जाएगा root 3 upon 2. root 3 upon 2 के whole square को दोनों साइड पे हम करेंगे add. So adding root 3 upon 2 whole square on both sides. Right? Adding root 3 upon 2 whole square on both sides. Now let's add. तो ये हो जाएगा हमारे पास x square plus root 3x as it is plus root 3 upon 2 whole square equal to minus 3 upon 4 plus root 3 upon 4 whole square. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास. अब इसको सॉल्व करने के लिए LHS में तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी. और कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? a प्लस बी होल स्क्वायर, बिकॉज माइनस यहाँ पे नहीं है. अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम अप्लाई करते a माइनस बी होल स्क्वायर. बट नाउ एज वी डू नॉट हैव माइनस साइन, इट विल बी x प्लस रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन, ओके दिस इज 2 नॉट 4, राइट. ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 4 प्लस रूट 3 स्क्वायर होता है 3 एंड 2 स्क्वायर होता है 4. माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इज 0. ठीक है. यहाँ पे अगर हम इसको ओपन भी करेंगे ना, विल गेट दिस ओनली. अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप चेक भी कर सकते हो. यहाँ पे इसको ओपन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो, यू विल गेट दिस. ठीक है. सो नाउ दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो अभी a प्लस बी होल स्क्वायर है. जब भी हमारे पास x स्क्वायर होता है, वी कैन राइट इट एज x इंटू x. ऐसे लिख सकते हैं. ऐसे इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस रूट 3 अपॉन 2, x प्लस रूट 3 अपॉन 2. 2 टाइम्स लिख देंगे हम बिकॉज स्क्वायर है. तो वी कैन राइट दिस 2 टाइम्स. नाउ
इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ पे अब -3/4 प्लस 3/4 0 आ गया था. नाउ अब पहले इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं. x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √3/2 इक्वल टू 0. ब्रैकेट सेम है दोनों, इट मीन्स दोनों रूट्स यहाँ पे सेम आएंगे. ठीक है, यहाँ से x क्या होगा -√3/2, राइट, and from here also x equal to -√3/2. So it means two zeros, two roots जो इस question में आएंगे they are -√3/2 and -√3/2. I hope this question is also clear. इसमें हमें आगे further solve नहीं करना पड़ा. Why? Because यहाँ पे ये 0 ही आ गया, तो हमने डायरेक्टली पहले इसको इक्वल टू 0 पुट किया, देन इसको इक्वल टू 0 पुट किया, and we got our answer. Steps तो वही अप्लाई हुए. पहले लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1 किया, देन कांस्टेंट को ट्रांसपोज किया, देन ऐड किया x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड्स पे. ठीक है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पे हमने ऐड कर दिया, देन उसको सॉल्व करेंगे एंड we'll get two roots. राइट, 2 क्यों आएंगे? बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पार्ट 2 है इसलिए 2 रूट्स आएंगे. ऑलराइट, प्लीज नोट डाउन पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Okay, so now let's start with part number 4, the last part of question number 1. Now, fourth part of question number 1 says 2x square plus x plus 4.
equal to 0. Again we have to find the roots by completing the square. So the first step is to make the coefficient of leading term 1. So divide the equation by बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, उसको 1 करना है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे हम. विल गेट 2x² / 2 प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0. ये 2 से 2 कट, ये 2 1s are 2, 2 2s are 4. So now we have x² प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल टू 0. इतना क्लियर है. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. x² का कोफिशिएंट 1 हो गया. नाउ आई एम टेकिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड. सो x² प्लस x/2 इक्वल टू -2. डन. नाउ कोफिशिएंट ऑफ x 1/2 है. 1/2 का हाफ 1/4 हो जाएगा. 1/2 का हाफ 1/4. अब 1/4 के स्क्वायर्स को दोनों साइड पे करेंगे ऐड. सो एडिंग 1/4 whole square on both sides. What we'll get? x² as it is, x/2 as it is. 1/4 whole square equal to -2 plus 1/4 whole square. Right? 1/4 whole square, 1/4 whole square. Now next step is to solve this. अब इसको सॉल्व करने के लिए दिस इज a, दिस इज b, दिस इज 2ab. प्लस में है सो a प्लस b होल स्क्वायर. x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 1/16. तो ये -2/1, ये 1/16. ठीक है. दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर. नाउ लेट्स सॉल्व दिस पार्ट. 16. सो इट मीन्स ये हो जाएगा इंटू 8 इंटू 8. सॉरी, दिस विल बी इंटू 16 इंटू 16. So we'll get into 16 into 16. So we'll get -32 plus 1. X plus 1/4 whole square as it is. Now here we have plus minus minus 31 and sign negative. -31/16 children. यहाँ पे x plus 1/4 का whole square as it is. Now see, अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए. Now we have to observe. देखो यहाँ पे है स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस. क्या कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? अगर हम -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आता है, राइट? और अगर हम 100 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 10,000 आएगा. मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कभी भी नहीं आएगा स्क्वायर में, राइट? सो इट मीन्स दिस cannot be solved further and it means real roots does not exist. Real roots does not exist. अगर exist करते तो यहाँ पे माइनस नहीं आता. ठीक है. सो इट मीन्स ये क्वेश्चन यहीं पे ही फिनिश. इसके रूट्स नहीं निकल सकते. रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. ऑलराइट. सो दिस वाज आवर पार्ट नंबर 4. इन दिस पार्ट अगेन वी सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. मेथड्स वही था, स्टेप्स वही थे. जस्ट एंड में आके स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस कभी भी नहीं आ सकता. इट मीन्स ये यहीं पे ही हम इसको लीव कर देंगे. रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. हमने प्रीवियस पार्ट्स भी करे हैं, उसमें कभी भी यहाँ पे माइनस नहीं आया, राइट? तो जब भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा इट मीन्स हम इसके रूट्स नहीं कैलकुलेट कर सकते. वी लीव दैट देयर एंड वील राइट दैट रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. प्लीज नोट डाउन पार्ट नंबर 4 इन योर नोटबुक्स फास्ट.
Okay, so this was our fourth part of question number 1. With this, we have completed our question number 1. We'll be starting with our second question in our next video. So stay tuned to my next video. In that video, we'll be discussing question number 2 of exercise 4.3. Alright, if you still have any doubt in this method completing the square, please mention in our comment section below so that I can make a separate video for that topic. Alright. Otherwise, if this is clear to you, please practice some extra questions from your extra book so that this concept is very much settled in your mind. Stay tuned to my next video. I'll be coming up with question number 2 soon. Thank you.